मेरे प्रिय देशवासियों, नमस्कार। Namaskar. कल से Navratri, the शक्ति festival की of worshipping उपासना का पर्व Shakti, is नवरात्रि का beginning आरंभ tomorrow. हो रहा है। आप सभी को Best wishes बहुत to बहुत all of you. शुभकामनाएं। नवरात्रि From the के first day of पहले दिन से Navratri, देश the country is taking आत्मनिर्भर another भारत अभियान important के लिए and major step एक और towards the महत्वपूर्ण self-reliant India और campaign. बड़ा कदम उठा रहा है। कल Tomorrow, यानी नवरात्रि के प्रथम with दिवस sunrise on 22 September सितंबर को 22nd, the सूर्योदय first day के of साथ ही Navratri, the नेक्स्ट next generation GST reforms जीएसटी रिफॉर्म्स will come into effect. लागू हो जाएंगे। In a इस way, तरह से a कल से GST देश savings festival is going to जीएसटी begin in the बचत country उत्सव from tomorrow. शुरू होने जा रहा है। इस This जीएसटी GST बचत savings उत्सव में festival will आपकी increase बचत your बढ़ेगी savings and और you'll be आप able to purchase अपनी the पसंद things की you want चीजों को more easily. और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश The के गरीब, poor, मध्यम middle वर्गीय लोग, class, न्यू मिडिल क्लास, neo-middle class, युवा, youth, किसान, farmers, women, महिलाएं, दुकानदार, shopkeepers, व्यापारी, businessmen, उद्यमी, entrepreneurs of our country, सभी को everyone ये will बचत benefit उत्सव का a lot from बहुत this फायदा होगा। savings festival. यानी This means त्योहारों everyone will के have इस something मौसम में sweet to eat during सबका this मुंह festive मीठा होगा। season. देश के हर And every परिवार की family in the खुशियां country बढ़ेगी। will be blessed. मैं देश के I extend कोटि my कोटि heartiest परिवारजनों को congratulations and best wishes नेक्स्ट to जनरेशन crores of जीएसटी families रिफॉर्म्स of the country और for the next इस generation बचत GST उत्सव की reforms बहुत बहुत and बधाई देता this हूं, savings festival. शुभकामनाएं देता हूं। ये These रिफॉर्म reforms भारत will की accelerate India's growth ग्रोथ story, स्टोरी को make doing business एक्सेलरेट easier, करेंगे, make investment कारोबार को more attractive, और आसान बनाएंगे, and make every state निवेश को an equal और partner आकर्षक in the बनाएंगे race for development. और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, Friends, जब साल when India took the 2017 step towards GST भारत ने reform in the year जीएसटी रिफॉर्म की 2017, तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक it पुराना marked the इतिहास beginning of बदलने की changing, और a shift in एक history, नया and the इतिहास creation of a new रचने one. की शुरुआत हुई थी। For दशकों तक decades, हमारे the देश की people of our जनता, country, all आप of you, सभी लोग, देश the के businessmen व्यापारी of the country, were अलग अलग entangled टैक्स के in जाल the में maze उलझे of हुए various थे। taxes: ऑक्ट्रोय, octroi, एंट्री टैक्स, entry tax, सेल टैक्स, sales tax, excise, वेट, VAT, सर्विस service टैक्स, न tax, जाने of such भांति भांति taxes के in our दर्जनों country. टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से If goods दूसरे had to be शहर sent from one city to माल another, भेजना हो one तो had to न cross जाने so कितने many चेक पोस्ट checkpoints, पार करने होते थे, fill so many forms. कितने ही फॉर्म There were भरने so पड़ते many थे, obstacles, and कितनी सारी everywhere रुकावटें there थी। were different tax rules. हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है I remember जब 2014 में when the country entrusted me देश ने with the मुझे responsibility of the post of प्रधानमंत्री पद Prime का दायित्व Minister in सौंपा था, 2014, तब उसी शुरुआत के दौर then में in that initial एक phase, विदेशी अखबार में an interesting example एक was दिलचस्प published उदाहरण in a छपा। foreign newspaper, उसमें in एक which कंपनी की the मुश्किलों का difficulties of a जिक्र company were mentioned. उस कंपनी ने कहा That था company had said कि अगर that उसे if it had to बेंगलुरु send से its goods from Bangalore 570 to किलोमीटर Hyderabad, दूर which was 570 हैदराबाद kilometers away, अपना सामान then भेजना हो
It was so difficult तो वो that they thought इतना and they कठिन said था that they would कि prefer उन्होंने the सोचा company और to उन्होंने first कहा send its कि goods वो पसंद from करती थी Bangalore to कंपनी Europe कि and then पहले send the अपना same सामान goods from Europe to बेंगलुरु से Hyderabad. यूरोप भेजे और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजे। साथियों, Friends, टैक्स और टोल के जंजाल की this was the वजह से situation back then due to the ये तब के complexities हालात of थे। taxes and tolls. और मैं And I'm आपके just साथ reminding you of an old एक example पुराना when उदाहरण याद lakhs दिला of रहा such हूं। companies, तब ऐसी lakhs of लाखों countrymen कंपनियों को, used to face problems लाखों every करोड़ों day due to the देशवासियों को maze of different types of अलग taxes. अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। The सामान को cost that arose एक during the शहर से transportation दूसरे शहर of पहुंचाने goods में from one city to जो another खर्च was बढ़ता also था borne by the वो भी poor and गरीब को उठाना was पड़ता था। recovered from customers like you. आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, Friends, it was देश को very important to get the country इस out of स्थिति this से situation. निकालना बहुत Therefore, जरूरी था। when you gave इसलिए us the opportunity in जब आपने 2014, हमें we made 2014 GST में our अवसर दिया, priority तो in the हमने public interest जनहित and में, in the national interest. देश हित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर We स्टेक होल्डर discussed से with चर्चा every की, stakeholder. हमने हर We राज्यों resolved की every doubt हर शंका of को every निवारण state, किया, हर सवाल found का a समाधान solution to खोजा। every question. सभी राज्यों By को, taking all the states सबको along, साथ such लेकर a big tax reform of आजाद भारत independent का India इतना बड़ा became possible. टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और It was the राज्यों result के प्रयासों का नतीजा of the था efforts कि of the देश center and the states दर्जनों that the टैक्सों country के became जाल से free मुक्त हुआ from the web of dozens पूरे of देश के taxes, लिए and a uniform एक system जैसी was व्यवस्था created बनी। for the entire वन country. नेशन The dream of one वन टैक्स nation, का सपना one tax साकार came हुआ। true. साथियों, Friends, रिफॉर्म reform is a एक continuous अनवरत process. चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय As बदलता times है, change and the देश की country's जरूरत needs बदलती evolve, है, तो next नेक्स्ट generation जनरेशन रिफॉर्म भी reforms उतने become ही equally आवश्यक है। necessary. इसलिए Therefore, देश की keeping in वर्तमान mind the जरूरतों current needs और भविष्य के and future सपनों को देखते dreams हुए of the country, these जीएसटी new के GST ये reforms नए रिफॉर्म्स are being लागू हो implemented. रहे हैं। नए In स्वरूप the new में format, there मुख्य will रूप से now be only अब सिर्फ 5% and 18% tax slabs. 5% और 18% This means के ही टैक्स that देने most होंगे। everyday items will इसका become मतलब more है affordable. रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का Food सामान, items, medicines, दवाइयाँ, साबुन, soap, ब्रश, brushes, पेस्ट, toothpaste, स्वास्थ्य और health जीवन and बीमा, life insurance. ऐसे अनेकों Many such सामान, goods and services will अनेकों either be सेवाएं tax free या तो or will only टैक्स फ्री attract a होगी 5% या फिर tax. केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन Of the सामानों goods पर पहले which were earlier taxed at 12% 12%, टैक्स लगा करता था, 99%, उसमें से that is nearly 100%, 99% have now यानी करीब करीब come 100 under के the निकट purview of 5% tax. 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। साथियों, Friends, पिछले 11 in the साल last 11 years, देश में 25 crore 25 करोड़ people लोगों in ने the country गरीबी को हराया have है, defeated poverty, गरीबी को conquered परास्त it, किया है और and गरीबी से emerging from बाहर निकल poverty, करके a 25 huge करोड़ का group एक of बहुत बड़ा 25 समूह crore people नियो मिडिल is क्लास के playing a रूप में significant role in the आज country देश today के अंदर as
the neo-middle बहुत बड़ी class. भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल This क्लास neo-middle class अपनी has its own aspirations हैं, aspirations, its own अपने dreams. सपने हैं। This year, the इस government gave साल them a gift सरकार by ने making income up to 12 12 lakh लाख रुपए rupees तक के tax-free. इनकम को टैक्स And it's फ्री natural करके that when एक there उपहार is दिया income tax relief और for स्वाभाविक the है income of 12 lakh 12 rupees, लाख रुपयों का it brings about a huge change in the lives of the middle तो class. मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, It कितनी becomes so सरलता easy सुविधा हो जाती and convenient. है। और अब Now, गरीबों the की poor, the बारी, neo-middle class, नियो मिडिल क्लास की and बारी the है। middle class are getting a double bonanza. अब गरीब Due to reduction in नियो मिडिल क्लास GST, को, it will मिडिल now be क्लास easier for the को एक citizens of तरह the से country to डबल fulfill their बोनांजा मिल dreams. रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर Be it बनाना, building a house, टीवी, buying a TV, फ्रिज a refrigerator, खरीदने की बात or हो, buying a scooter, स्कूटर, bike, or a car, बाइक, you'll कार have to खरीदना spend हो, less ये on सब all of पर these. अब Traveling will also कम become खर्च cheaper करना for होगा। you as GST आपके has लिए been reduced घूमना on rooms फिरना in भी most सस्ता hotels. हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, By the way, friends, मुझे इस बात की खुशी I am pleased that कि दुकानदार shopkeeper भाई brothers बहन and भी sisters जीएसटी रिफॉर्म are को also लेकर very बहुत enthusiastic about the GST reform. वो बहुत जीएसटी में हुई They कटौती are को very busy in ग्राहक passing on the तक GST पहुंचाने में reduction जुटे to the हुए हैं। customers. बहुत सारी जगहों पर Signboards पहले displaying the और अब के before and now और prices लगाए जा रहे are हैं। being put up in many places. हम Friends, the mantra नागरिक Nagrik देवो Devo Bhava, भव, Nagrik Devo Bhava, के जिस मंत्र के साथ with आगे बढ़ which रहे we are हैं, moving forward, नेक्स्ट जनरेशन is जीएसटी clearly रिफॉर्म में reflected in the next उसकी generation GST साफ reform. झलक दिखाई देती है। अगर हम If we add the इनकम exemption टैक्स in में income tax छूट and the और exemption जीएसटी में in छूट को GST, जोड़ दें then तो the एक decisions साल taken in 1 year में जो will निर्णय save बने हैं, more than 2.5 उससे lakh देश crore के rupees लोगों for को the people of the country. 2.5 लाख And that's why I करोड़ am रुपए से saying ज्यादा की this is बचत a होगी। savings festival. और तभी तो मैं कह रहा हूं ये बचत उत्सव है। साथियों, Friends, to विकसित achieve the भारत goal की of तरफ developed कदम India, रखने के लिए we will have to follow हमें the path of आत्मनिर्भरता के self-reliance. रास्ते पर चलना ही होगा और And भारत a को huge responsibility of making India आत्मनिर्भर बनाने self-reliant में also lies on बहुत our बड़ा MSMEs, दायित्व that is, हमारे our एमएसएमई small, medium, and यानी cottage industries. हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों Whatever की is needed by the जरूरतों people है, of the country, whatever we can जो make in हम the country देश में ही itself, बना सकते we हैं, should make it in the country वो itself. हमें देश में ही बनाना चाहिए। साथियों, Friends, जीएसटी with की the दरें reduction कम in करने GST से rates नियम and simplification of rules प्रक्रियाएं and procedures, और आसान बनने our से MSMEs, हमारे our एमएसएमई, small scale industries, हमारे लघु उद्योगों and को, cottage कुटीर उद्योगों industries को will benefit a lot. बहुत फायदा होगा। Their sales will increase उनकी बिक्री and they बढ़ेगी will have to pay less और tax, टैक्स भी कम देना पड़ेगा, which means यानी they will also get double उनको benefit. भी डबल फायदा होगा। Therefore, today I have इसलिए great आज expectations from मेरी all of you, be it एमएसएमई से MSMEs, लघु उद्योग small हो, industries, micro सूक्ष्म industries, उद्योग or हो, cottage industries. कुटीर उद्योग हो, You also know आप that when सबसे India was at the बहुत peak of अपेक्षाएं prosperity, हैं। the main आपको भी basis पता of है India's economy जब was भारत our अपनी MSMEs, समृद्धि के शिखर पर था, our small तब and cottage industries. भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य India's आधार manufacturing हमारे
The quality of goods produced in India used to be superior. हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे. We have to get that pride back. Whatever our small industries produce should be the best in the world by every standard, the best of the best. Whatever we manufacture should surpass all the parameters of being the best in the world with pride and prestige. We must work towards improving the quality of our products, enhance India's recognition in the world, and increase India's pride. देश के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो. हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए. हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है. साथियों, Friends, just as the country's independence was strengthened by the mantra of Swadeshi, similarly, the country's prosperity will also be strengthened by the mantra of Swadeshi. Today, knowingly or unknowingly, many foreign things have become a part of our daily lives, and we are not even aware of it. We do not even know whether the comb in your pocket is foreign or Indian. We will have to get rid of all these also. We should buy goods that are made in India, in which the hard work of our youth, the sweat of our sons and daughters are involved. We have to make every home a symbol of Swadeshi. Every shop has to be decorated with Swadeshi. Say it with pride that this is Swadeshi. Say with pride, I buy Swadeshi. I also sell Swadeshi goods. This should become the attitude of every Indian. When this happens, India will develop rapidly. गर्व से कहो, मैं स्वदेशी खरीदता हूं. मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं. ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए. जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा. मेरा Today, I also urge all state governments to accelerate manufacturing in their states. With this campaign of self-reliant India, this campaign of Swadeshi, and to join with full energy and enthusiasm. Enhance the environment for investment. पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं. When the center and states move forward together, the dream of a self-reliant India will be fulfilled. Every state in India will develop, and India will develop. With this sentiment, I conclude my speech, and once again, extending my best wishes for this Savings Festival. Once again, I wish you all a very happy Navratri and the GST Savings Festival. Thank you very much. बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद.